Today we are going to learn about the fractional distillation. So this is a lab setup for the fractional distillation, right? As we have studied in the previous video about the simple distillation. So it's more or less the same setup. Only the difference we have here is a fractionating column. This is a fractionating column. So this is an addition to the simple distillation setup, right? So the four important apparatus which are attached to this particular setup, lab setup, number one, is your basically your round bottom flask, right? So this is basically your number one is your round bottom flask. Now, why do we have a round bottom flask? So that you have a uniform heating, right? So the heat is uniformly spread out. So that is why we have a round bottom flask. Whereas in the simple distillation, we had a distillation flask. What's the difference between a distillation flask and a round bottom flask? The difference was that the distillation flask has an arm to which the Liebig condenser is attached, but here to which the condenser is attached. But here we don't have that particular arm. So this particular flask is actually known as round bottom flask, right? Now, after the round bottom flask, the second apparatus we have is basically your fractionating column. The second one is your fractionating column. It's already labeled, right? So we'll talk about the purpose of the fractionating column in a while. Then the third apparatus we have here, the third, we will be calling it the thermometer. That's a thermometer. And the fourth one, we have the condenser. The fourth one is a condenser. Its purpose is same. What was it? It had in the simple distillation that whatever the vapors are coming into it, the vapors which are coming into your inner tube, they are being condensed by this Liebig condenser, right? This has two arms. The lower arm will always be a water in and the upper arm will always be a water out. And the fifth apparatus, where we need to separate, collect the components of the mixture separately, we call it a receiver flask. This is the receiver flask where you'll be collecting your fractions. In we used to collect in the distillation, we used to call it distillate, but here we will be calling it fractions. So whatever the component of the mixture will be collecting, we will be collecting those fractions in the receiver flask. So these are the five apparatuses which are attached in the lab setup for the fractional distillation. Now let's talk about the method. Just similar to the methods which we have studied in the distillation, the method comprises of three basic steps. So what happens here? First of all, the first step which is taking place here, the mixture, whatever the mixture, right, you have here, the mixture is basically boiled. So the first step is basically your first process step is going to be boiling. Now, when the boiling take place, and definitely what will happen, the vapors they are going to evaporate. The component of the mixture, they are going to evaporate. So the second step is basically your evaporation, right? And the third step, which is a part of the method, is basically your condensation, which is going to take place in your condenser. So whatever the vapors are going to enter the condenser, they are going to be condensed, right? So condensation is basically the third process. It's a condensation. Condensation. So this whole process of fractional distillation comprises of simple three steps, three processes, right? Three steps or processes. Number one, you have boiling. Number two, evaporation. And number three, condensation. Now, let's talk about the details of the process, right? So before we move on to the details of the process, let's talk about what kind of mixtures we can separate. Mixture can be separated. What kind of mixtures can be separated by this kind of a technique, by fractional distillation? So specifically, we have two criteria, two type of mixtures we can separate. Number one, the miscible, the mixtures of the miscible components, or we can say where the two liquids which are thoroughly mixed together. So if we have a mixture of miscible liquids, we can separate their component.
So if we have a mixture of miscible liquids, like it has an A component into it, B, C, D, and they're thoroughly mixed together. So we can separate all these components which are mixed together as a liquid. So first thing is that. Secondly, we use this particular technique when we have the boiling points which are extremely close together. When the boiling points are close together. Let's say if we have a substance A, its boiling point is 76 degrees Celsius, and we have a substance B, it has a boiling point of 84 degrees Celsius. So these are considered as close boiling points. When we have that close boiling point, we go for the fractional distillation. And the simple distillation we were going when we have a boiling point, there were the vast difference between इनके बीच में जब दो कंपोनेंट्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनके बीच में अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो तो आप जाते हैं देन यू गो फॉर सिंपल डिस्टिलेशन राइट and the fractional distillation you specifically go when you have a close boiling point 8 10 12 ka difference ho so you will be going for fractional distillation. Now let's talk about what exactly the details of this process. Okay, so what are we going to do is we are going to take a mixture of miscible liquids, ठीक है, जहां पर उनका boiling point जो है वो close है, they have a close boiling point. Now in this particular apparatus we can see that they have an ethanol and they have a water as a mixture. You can have the other example is that which we have in our syllabus is the petroleum. Petroleum is a mixture where you have a petrol there. Petrol is one of the component. Diesel is another component. Kerosene oil is another component. So these are miscible. These are miscible liquids which are found in petroleum. So when we'll be doing the organic chemistry, we'll see that how petrol, diesel, kerosene oil, lubricating oil, butane, all these components get separated. And we separate them by the fractional distillation, not by the lab setup. We have the commercial setup, we have an industrial setup of fractional distillation, right? So now what happens here, what we are going to do is that we will be taking the mixture in the round bottom flask, the flask in which we are going to heat it up. So we have a mixture here. Now, after we have the mixture here, let's say this has a mixture. It has a component A and B, and they have got a close boiling point. Then after that, what we'll do, we'll start heating it. हम इसको इस mixture को heat करेंगे. So definitely the vapors of the substance whose boiling point is low, जिसका boiling point जो है वो low है, उसके वेपर्स पहले वेपराइज होंगे. तो लेट्स से ए का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 76 है और बी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 84 डिग्री सेल्सियस है. लेट्स अज्यूम, ठीक है, दिस इज नॉट, हम इसको इग्नोर करते हैं कि इथेनॉल एंड वाटर का, हम कहते हैं कि जनरली बात करते हैं कि मिक्सचर जो है ए एंड बी का बना हुआ है और ये दोनों सब्सटेंस जो है वो मिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, दे आर मिक्स इनटू ईच अदर और ये उनके बॉइलिंग पॉइंट. तो डेफिनेटली आपका ए जो है कंपोनेंट जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 76 डिग्री सेल्सियस है, इसके वेपर्स जो हैं वो वेपराइज होना शुरू करेंगे. ठीक है, अब जब वेपर्स वेपराइज होने शुरू होंगे तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ अटैच्ड है नेक्स्ट apparatus which is your fractionating column. Now this fractionating column is a tube which is filled with glass beads. These are basically glass beads, and we know that the glass is a bad conductor of heat. So when these vapors are going to hit these glass bead, तो ये नीचे का यहाँ पर जहाँ पर वो hit करे उसका temperature 76 कर देगा. फिर उसके बाद देर आर स्पेसेस इन बिटवीन, तो फिर ये वेपर्स और जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे से वो वेपराइज हो रहा है ए, तो क्या होगा, दे विल बी मोर वेपर्स, सो दे विल बी पासिंग थ्रू द गैप्स एंड दे विल बी हिटिंग मोर ग्लास बीट्स. तो वो टेम्परेचर स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे वो मूव करेंगे वैसे वैसे इस पूरे फ्रैक्शनिंग कॉलम का टेम्परेचर जो है वो 76 कर देंगे. एंड देर इज ओनली वन पैसेज, तो 76 वाले जो वेपर्स हैं, कंपोनेंट ए के जो वेपर्स हैं, दे विल बी मूविंग इनटू द कंडेंसर, और कंडेंसर के अंदर आपका जो वाटर इन है और वाटर आउट, यहाँ से वाटर, कोल्ड वाटर एंटर हो रहा है, तो वो जो अंदर वेपर्स हैं उसको वो कंडेंस करता हुआ ये सिंक के अंदर चला जाएगा. ये अटैच्ड है टू द टैप.
तो ये क्या करेगा, कंपोनेंट ए के वेपर्स को, ठीक है, ये कंडेंस करेगा और दे विल बी फॉलिंग इनटू द रिसीवर फ्लास्क एंड वी कॉल इट द फ्रैक्शंस, हम इसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारे पास वो फ्रैक्शन आ गई जिसका बॉइलिंग पॉइंट इस मिक्सचर के अंदर सबसे लो है, ठीक है, वो वाली फ्रैक्शन आपके पास आ गई। अब हो सकता है देयर आर चांसेस कि ए के साथ हमारे पास एक और फ्रैक्शन जो है बी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 84 है, तो हो सकता है दैट फ्रैक्शन इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द कंडेंसर यहाँ पर। तो हो सकता है कि किसी वजह से कि बी के वेपर्स भी ए के वेपर्स जब जा रहे हैं, तो बी के वेपर्स भी कुछ, सम ऑफ द वेपर्स they might start evaporating because the boiling point is so close to 76 वाले vapors हैं, तो there are possibility maybe the B is stuck to the walls of the condenser of the round bottom flask, तो B के vapors भी जाने लगे। तो B के जब vapors जाएंगे और A and B के दोनों के vapors जाएंगे, तो अब होगा क्या, क्योंकि इस पूरे कॉलम को A के vapors ने slowly and gradually they are filled with glass beads, so slowly and gradually A के वेपर्स ने इसको पूरा इसका टेम्परेचर मेंटेन कर दिया 76। अब बी के जो वेपर्स इसमें जाएंगे, जो बी के वेपर्स जाएंगे, तो बिकॉज उनका अपना कंडेंसेशन टेम्परेचर जो है वो 84 है, when they'll come across the temperature of 76 they will condense back into the same receiver flask. Ab they will not be allowed to pass through this condenser, instead they will be falling back into the round bottom flask. तो इससे क्या होगा कि सिर्फ 76 वालों को इजाजत है, 84 वाले दे आर कमिंग बैक, राइट। वंस ऑल द 76 वाला जो टेम्परेचर के जो कंपोनेंट्स है, वंस दे ऑल हैव बीन condensed and they're being separated as a fraction, okay, so what will happen, what we will be observing case slowly and gradually, तो for a time being यहाँ पर कोई भी fraction नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि अब 76 और 84 के बीच में डिफरेंस है। तो उस टेम्परेचर को राइज करने के लिए देयर विल बी सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, जिस टाइम ड्यूरेशन उसको टाइम लगेगा कि अब बी वाले कंपोनेंट्स जो हैं वो राइज करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास 76 वाले तो खत्म हो गए, तो 76 वाले तो है ही नहीं, अब थोड़ा टाइम लगेगा कि थोड़े टाइम के बाद आपका जो 86 84 वाले जो वेपर्स हैं बी के, वो कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास फ्लास्क में सिर्फ बचा ही बी है। तो बी वाले जब वेपराइज होंगे दे विल बी, अब यहाँ पर टेम्परेचर कितना था, मेरे पास था 76। अब व्हेन द बी वाले वेपर्स दे विल बी टचिंग, दे विल बी स्टार्ट टचिंग द ग्लास बीड्स, तो अब टेम्परेचर 76 से कितना हो जाएगा, द टेम्परेचर as they will be touching, they'll be heating the glass beads, तो अब टेम्परेचर हो जाएगा आपका 84। अब वो इन ग्लास बीड्स के थ्रू आगे निकलेंगे, तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर और ऊपर का 84 हो जाएगा, फिर ये जब और ज्यादा वेपर्स ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो अब फिर और 84 हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे के पूरे फ्रैक्शन का आपका जो टेम्परेचर है वो 84 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एंड नाउ द वेपर्स ऑफ बी दे आर मोर इन कॉन्सेंट्रेशन, दे आर नॉट गोइंग बैक आफ्टर कंडेंसिंग इनटू द राउंड बॉटम फ्लास्क, बट नाउ दे आर क्लोज टू the end which is attached to the condenser, और अब इस कंडेंसर में से A वाले तो गुजर चुके हैं, अब इस कंडेंसर में से B वाले वेपर्स जाएंगे। जब B वाले वेपर्स जाएंगे तो सिमिलर प्रोसेस विल टेक प्लेस, द B वाले वेपर्स जो हैं वो अब उनका कंडेंसेशन होगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर पहले कितना दिखा रहा था, पहले दिखा रहा था 76। अब जब बी वाले वेपर्स यहाँ जाएंगे दे विल बी टचिंग द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, सो नाउ द थर्मामीटर विल बी शोइंग दैट 84 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर। दैट मीन्स नाउ मैं दिस इज एन अनदर इंडिकेशन which proves that 76 is over. Now the second component is coming, so I need to change this flask, I need to replace this flask, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फ्रेश फ्लास्क लगाऊंगी और उस फ्रेश फ्लास्क में मैं फ्रेश फ्रैक्शन कलेक्ट करूंगी, जो कि मेरा 84 वाली बी कंपोनेंट की फ्रैक्शन आ रही है। अब आफ्टर अ व्हाइल व्हाट विल हैपन, अब बी वाला कंपोनेंट आ गया और बी वाला कंडेंस होके बी वाला स्टार्ट फॉलिंग, एंड नाउ आई विल हैव अ फ्रेश फ्लास्क, रिसीवर फ्लास्क, जिसमें मेरे पास बी कंपोनेंट कंडेंस होकर आएगा, और ये बी कंपोनेंट जो होगा इसका टेम्परेचर कितना होगा 86, ठीक है, 86 वाला बी कंपोनेंट आएगा। सो नाउ आई विल स्टार्ट गेटिंग द फ्रैक्शन B here. Is it clear? So this is basically a precautionary method. This is a precautionary method. ये आपका precautionary method है
जिसके अंदर हम एक स्टेप अहेड जा रहे हैं। हम अगर हमारे पास क्लोज बॉइलिंग पॉइंट वाले दो कंपोनेंट्स हैं या तीन कंपोनेंट्स हैं, हम उनको मिक्स, बिकॉज आवर इंटेंशन इज टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सेबल लिक्विड। तो यहाँ पर दे आर फिल्ड विद द ग्लास बीट। तो ये क्या करेगा, व्हाट विल हैपन हियर, कि ये जो जिसके भी लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसका भी लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उन वेपर्स को अलाउ करेगा स्लोली ग्रेजुअली पूरे फ्रैक्शन का, क्योंकि दे विल बी मोर इन कॉन्सेंट्रेशन, तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है, जिसकी वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले जो वेपर्स हैं दे विल बी टचिंग द ग्लास बीड्स एंड दे विल बी फॉलिंग बैक अगेन। ठीक है, दे विल नॉट, this fractionating column is not going to let the high boiling point wale components pass through it. So this is a precautionary method jahan par we go for where they have a close, where the components have close boiling point. तो ये प्रिकॉशनरी मेथड्स हैं। हम दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट जिनके क्लोज बॉइलिंग पॉइंट है उनको हम अलग अलग एज सेपरेट फ्रैक्शंस जो हैं वो हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे हमें इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ पर अलग अलग फ्रैक्शंस आती हैं, एक तो आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज दिखाएगा थर्मीटर, और दूसरा फॉर अ टाइम बीइंग आपके फ्रैक्शंस, आपकी जो ड्रॉप्स गिर रही हैं उसके बीच में एक टाइम का गैप आएगा। जब ये टाइम का गैप आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट फ्रैक्शन आ रही है, सो यू कैन रिप्लेस दिस receiver flask. So that is the only difference between the simple distillation and the fractional distillation. But fractional distillation is actually used in commercial uses. ठीक है, जैसे for example, in order to separate out the components of petroleum, which will be studying the industrial setup in your organic chemistry.